Okay. Hello. Good morning, everyone. Welcome to our first live session of options की बात ICICI Direct के साथ. Just check the audio. Am I audible? Just a minute. So today we have Mr. Dinesh Nagpal with us. Dinesh Nagpal is a full-time investor. He has been in the market since 2000, and he's a technical analyst. He trades basically using two indicators, that is the Japanese Ichimoku pattern, and also uses harmonics. So today we'll be discussing about Nifty, Bank Nifty, some sectors, and also option data of both the index and any stock that we can find. Also, this session will be a mix of Hindi and English. तो जो हमारे हिंदी के भी दर्शक हैं उनके लिए भी हम बीच में हिंदी में भी बात करेंगे, तो ये एक इंग्लिश सेशन रहने वाला है. सेशन स्टार्ट करने के पहले, बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी जस्ट क्लियर वन थिंग. व्हाट एवर वी डिस्कस हियर इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज टिप्स और एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस. यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन. Whatever we discuss here is just to give you a better view or better understanding about the markets and the data. Moving on, I'll hand over to our guest, Mr. Dinesh Nagpal. Dinesh sir, you can take ahead. Thank you, ICICIdirect, and thank you, Gaurav, for that wonderful introduction. It's a pleasure to be here, and I hope I am give a wonderful explanation to all the viewers who have logged in right now, and which will help them in their investing and trading view going ahead from here. Yeah. So if we look at the market, in the last 1 week or so, 2 weeks rather, the market has, been largely driven by a few large caps. The overall market view was, there were a lot of mid caps which were stock moving, and a lot of large caps also saw a slight decline happening in the market. So overall breadth was not very good. The advanced decline breadth has been slightly tapering downwards, even when the index was going up, which led to the belief that it was select stocks which were running the move. And also, we can see that if we go to the daily, one second, yeah. So we can see out here that the candles in the daily got smaller. This was after the US web result and everything, CPI data. Candles got smaller and smaller out here in spite of this breakout above this zone. So what we are probably seeing is two things happening. Number one, we are seeing sector rotation happening. The stars of 2022, the chemical sector in particular, is seeing selling off late, and the stocks are the sectors which are consolidating. I wouldn't say they were laggards. They were consolidating for a very long period of time, which were the public sector enterprise companies, the PSU banks, and from the infra space, the cement stocks have started moving up. So it's a shuffle happening. The weightage is turning from one side to the other, and within the sectors also, if you look at the auto sector, the star performer of 2022, Eicher Motor and TVS Motor, this month, particular November, have seen some selling coming into them, while stocks, which were not performing in the auto sector have now stopped falling. So some within the sector shuffling happening, some sector overall change happening. Hands are changing because, in every trend, the same sector will not run all the time. Some sectors will move in, some the pattern keeps changing. वो हाथ थोड़ा इधर उधर होता है और कुछ परफॉर्म करते हैं, कुछ अंडर परफॉर्म करते हैं, और वैसे इंडेक्स और मार्केट की मूवमेंट चलती है. तो ये बोलने के बाद ये नहीं है कि मार्केट टायर्ड हो गया है या ऐसा कुछ हो गया है. अगर हम एकदम शॉर्ट टर्म को अगर समझने जाते हैं, माना नेक्स्ट 2 हफ्ता या मैक्सिमम 3 हफ्ता, तो शायद थोड़ा कैप हो सकता है 2 हफ्ते के लिए कि ये जो शफल हो रहा है इसमें
थोड़ा सा पिक्चर साइडवेज होगा. So in the words of Jesse Livermore, there is a time to be long, there is a time to be short, and there is a time to stay away, not being too aggressive in this market. Right now, I think that we are at that stage. In the immediate short term, I would say from this settlement or, just starting off December, let the picture become slightly clearer in the entire scenario. So having said that, so if we just look at charts from just simple, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं डालेंगे, कुछ वैसा नहीं देखेंगे, इसको just basic simple trend line अगर हम draw करें from this chart which is available on the ICICIdirect platform, and we just run it down, ये जो October 2021 से जो decline आया था up to June, और इसको हम अगर extend करते हैं to the right, yeah. And I'm going to take it here. Yeah. So ये जो decline आया था अपना, ये this one. So 1 dip, 2 dip, 3 dip. Then in June we had a major turnaround. It's gone up. So technically we are breaking above this line. We are breaking above this particular line out here. Let me just take a line and draw and show it to you. Yeah. So we probably, we broke above this line. We broke above, we are here. We're pushing it up from there right now. And it's just a matter of 200 points when we move up. But the question is that, are we set for this kind of a huge move one way? No, the scene right now looks like is that just simple. अगर हम इसको simple trend line, just look at it from a simple trend line point of view. What probably can happen at this stage is something like this. This breakout that we are seeing out here could just come down, retest this trend line out here, this breakout which took place, and again resume an uptrend. So an advice to most traders is that right now, don't go aggressive either side, wait for a proper signal to come. If we start sustaining above 18,450 on a daily basis or 18,550 intra, okay, this would be intra, this would be daily, then yes, we're not just heading for 18,600, something like that. We are probably heading towards 19,500. That kind of a move can come. The wait for that to happen. And on the downside also, as an aggressive trader, which I'll just explain to you in the lower time frame, is that unless we are now, the move down is a bit slow right now. It's not that fast. We had one-off day of heavy selling. So right now there's major support sitting at 18,150. If that cracks, then this comes down to 18,900, which is again a very good support. So it's not going to be a one-way move down happening or a one-way move up happening. It's more of squeeze happening out here, which we saw even on the up move. So in another simple manner, if I were to just explain it from a layman's point of view, is that we've seen Nifty go up like this, but the small caps and the mid caps, and to an extent, जो बाकी सब large caps भी है जो नहीं चले, उनका ऐसा मूव हुआ है, ऐसा कुछ मूव, ऐसा रहे, वो ऐसे चल रहे. तो ये अब जो टाइम है नेक्स्ट 10-15 दिन का, ये मैचअप टाइम है. ये जो सेक्टर है, ये जो स्टॉक्स जो नहीं चल रहे हैं, जो जिनमें मूवमेंट नहीं आया है, ये या तो आप ऊपर जाके मैच करेंगे, या तो जो लार्ज कैप्स जो बहुत ऊपर गए वो थोड़ा सा डाउनवर्ड डिप लेंगे. तो ये हमारा एक बैलेंसिंग हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा इधर आके, तब वापस ओवरऑल ट्रेंड. सो इन शॉर्ट, the overall trend picture is very bullish. It's just that we are looking at a pullback, good correction. Healthy corrections are always good. Smart money from point of view also, you get chances to accumulate happening out here. And one more thing is that in the last 1 year, more than 1 year, in fact, from the COVID lows, Nifty has outperformed global markets, especially the Dow.
we've had a major outperformance against the Dow. Okay, we've done superbly well against the Dow, against the FTSE, against probably every sector. So if you go to see from October, early October, it's been a slight change. Dow is doing better than Nifty. Now, that reason is not that Nifty has topped out or Dow has bottomed out. The main reason is Dow was heavily oversold. There was tremendous pessimism in the US markets and all that, and their VIX had gone out of control, everything. So it got back. So what is probably happening is that we are, even in global terms, we are trying to match up. The balance is getting there. So we are doing a little bit of sideways while they make up for their, overextended downward moves. Or once that is done, we will again resume. We will again, most likely, will continue to outperform other markets in the world. Now, that takes care of the global scene out there. Now, apart from that, I would like to show you one bearish harmonic setup. Now, the reason behind why I'm particularly saying this is a bearish harmonic is that here we have a bearish harmonic out here in the Nifty, which got triggered 2 days back. Okay. Pattern, bearish harmonic pattern took place out here. Now, this pattern tends to do a retracement. Large picture. Yeah. So this harmonic pattern tends to do a pullback. Right. Till this zone, 17,700, odd like this. And it gives you another opportunity to buy in this zone out here. Okay. Let's plot it and show it to you. So something like this comes here, takes a turn, and then moves up. So this particular zone is something what this pattern is suggesting for a pullback to happen. So short term, again, I would say, is a zone where not to be aggressive. If the level of 150 also fails to hold, then yes, aggressive. Some you might. That also I feel will be like a one-off 2-day affair, again sideways and again like that. It's not going to be so smooth a sell-off happening at this zone, because remember, we are in a breakout area. Okay, so just weak hands are being moved out, and smart money is accumulating in that zone for a bigger move up going from there. Now, I'm going to remove this. Okay, sir, before moving, can I summarize this in Hindi? Because the people who are there, the viewers who have joined us, have... Yeah. So just 1 second. I'll just again एकदम layman perspective में इसको अगर हम देखेंगे तो 1 minute. एकदम layman perspective में एक माना जिसको टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है उनके लिए भी ये माना सिंपल जिनको है अभी लेमन, ये एक लाइन चार्ट है. ये आप देखते हैं यहाँ में एक माउंटेन, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से वापस मार्केट गिरा. जस्ट लेट मी हाईलाइट इट. Highlighter will be better. Yeah. यहां से मार्केट गिरा, फिर यहां से मार्केट गिरा, फिर यहां थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया. तो अब मार्केट क्या कर रहा है कि वापस ये जो हाईलाइटेड जोन है, ये वाले जो जोन है माउंटेन, इसको रीटेस्ट कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है कि यहां तक शायद आएगा. इस जोन में मैक्स टू मैक्स ये वाला जोन जो था 17,800, ये वाला जो यहाँ में एक छोटा माउंटेन बना है ऐसे, ये तो ये जोन को टेस्ट करने के लिए और फिर वापस रिजम्पशन ऑफ द अप ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा है. सो आप कोई भी टेक्निकल स्टडी पकड़ो, ये एकदम कॉम्प्लेक्स स्टडी ले लो,
एकदम मीडियोकर स्टडी, सिंपल, जस्ट इसको एकदम कीप इट सिंपल एनालिसिस से देखेंगे, लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू, सिंपल स्कूल रिथमेटिक, मैथ्स, ज्योमेट्री आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो लेवल था, ये पहाड़ को उसने तोड़ के ऊपर निकला। तो अब खाली वो ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट है, जो एक नॉर्मल टेंडेंसी होता है मार्केट का। ब्रेकआउट्स में पुल बैक होना एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है। इवन जब ब्रेक डाउन होता है मार्केट, तो मार्केट थ्रो बैक करता है, कोई न्यूज आता है या जो न्यूज डिस्काउंटेड होती है मार्केट में, उस हिसाब से तो हम वही कर रहे हैं वापस। हम वही, ये देखिए जब फॉल आया था तभी भी मार्केट कोशिश किया था ऊपर जाने का, यहाँ में भी कोशिश किया था या तो सिमिलरली ये एक स्ट्रक्चर है जो सजेस्ट कर रहा है कि 18,000 17,800 के बीच का जोन विल सी again aggressive buying coming into the market. Yeah, now you can say. तो सर आप ये कह रहे हो कि अगर जो ब्रेकआउट आएगा इंट्राडे में 18,550 के ऊपर आएगा और डेली क्लोजिंग बेसिस पे 18,450 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज होता है तो वहां से ऊपर जाएंगे। उसके पहले एग्रेसिव लॉन्ग होना फिलहाल एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज वन मोर रीजन कि द स्टडी ऑफ इचिमोकू व्हिच आई डू इज it works on time and price equilibrium. So there was a price and time equilibrium turn date on the 16th of November. So based on that equilibrium turn date, it is suggesting that till the next date, which might occur over a period of a couple of weeks, a fresh long at the immediate juncture is not advised. It would only be impacted if we see the 18,450 taken out on a closing basis. Simple as that. So from a Nifty index trader, I would be short term, that is a couple of days, I would look for rises to buy puts or to sell calls or to go short in the market, and accordingly turn till 18,000, 17,800. Perfect. So जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं और जो भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं जो ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे हैं, वो लोग के लिए इंट्राडे बेसिस पे 18,550 के ऊपर ही आपको लॉन्ग जाना है, अग्रेसिव लॉन्ग बेसिकली, और 18,450 के ऊपर जब क्लोजिंग मिल जाए तो वहां पे आपको फ्रेश लॉन्ग करना है। ये स्टेज पे वेट एंड वॉच। नीचे की तरफ अग्रेसिव शॉर्ट भी नहीं करना है। हमारा जो नीचे की तरफ जो सपोर्ट बन रहा है 18,150 और 17,900 के पास बन रहा है। तो अभी के लिए एक बड़ा रेंज अगर आप बोल रहे हो तो 18,450 से लेके 17,900 का रहने वाला है। उसके बाहर निकलेंगे तो हमें एक मैसिव मूव, एक अग्रेसिव, तो ये जो 17,800 का जो हम रेंज बता रहा हूँ, नीचे वाला जो 17,800 वाला रेंज है, वो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। आया, टच किया, टर्न करके चला गया, वैसा हो सकता है। तो दी एग्रेशन, I would become a buyer once it comes down to 17,800 line. Like a crazy buying I will attempt at that level. उस समय, so when to be aggressive, when to be defensive. Right now is the time to be more defensive. Go calm, let the show go on, let there be clarity. बिकॉज इतने छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं ना, इतने छोटे छोटे कैंडल्स कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं। और वो छोटे कैंडल जो बन रहे हैं, इंट्राडे मूवमेंट सुपर फास्ट है। अगर आप कल का भी जो कल फ्राइडे आवरली का भी अगर आप मार्केट देखोगे, सो लुक एट दिस, वी हैड अ शार्प डंप ऑन थर्सडे व्हिच वाज एन एक्सपायरी लास्ट 1 hour, एंड देन यस्टरडे स्लो एंड देन लास्ट 1 hour टेक ऑफ अगेन लाइक दिस। तो इट्स लाइक दैट, अगर आप ब्रेकआउट इस समय इन द लोअर टाइम फ्रेम, इट्स नॉट अ breakout market or a breakdown. It's more of buy the support, sell the resistance. So because the Ichimoku time and the harmonic setup is such, मेरे लिए it is sell the rise in lower time frames till we don't reach that level. Perfect. तो इसका मतलब जो लेवल्स आपने बोला है, ऊपर की तरफ 18,450 और इंट्राडे बेसिस पे 18,550, नीचे की तरफ 17,900 और 18,150 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके लिए, आपको निफ्टी अग्रेसिव होने के लिए आपको लेवल्स मिल गए हैं, आपको कॉशन होने के लिए भी लेवल्स मिल गए हैं। नीचे की तरफ 17, अगर सर 17,900 आता है, वहां पे लोग बाय करेंगे। तो अगर बाय चांस वो लेवल फेल हो गया तो नीचे की तरफ कहां पे उन्हें निकल जाना चाहिए? अगर बाय चांस 17,900 18,150 के आसपास जो बायर है हमारे, अगर बाय कर रहे हैं, बोलूंगा मैं 800 बोलूंगा। सो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम भी देख रहे हैं, अगर लोअर टाइम फ्रेम से मंडे सुबह का सिनेरियो ऐसा कुछ होता है, तो ये जो लेवल है
18, ये वाला जो लेवल है इधर हमारे स्क्रीन में 18,050, 18,100, मार्केट यहां से भी ऐसे टर्न मार सकता है ये लेवल तक, अगर आप सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो ऐसे, तो यहाँ आया, यहाँ गया, और वैसे तो इतना इजी नहीं होने वाला ये मार्केट में सेलिंग, इतना Perfect. इजी बाइंग भी नहीं है, सीलिंग भी नहीं है। इट इज बिकॉज आप इसको इस एंगल से देखो कि अपसाइड खुल चुका है, खाली शॉर्ट टर्म के लिए एक डिप आ रहा है मार्केट में फिलहाल ऐसा लग रहा है, तो उसमें सेलिंग इज नॉट सो इजी इन दैट Okay. मार्केट। वही होगा, एक दिन 2 दिन, नेक्स्ट दिन गैप मार दिया, वैसे Perfect. वैसे ट्रेवल करेगा सब ट्रेडर। तो सर ये रही निफ्टी की बात। तो अब निफ्टी देख लिया, तो एक और मेजर इंडेक्स है हमारे पास, वो है बैंक निफ्टी। तो हाँ, लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी फ्रॉम हियर। एंड आई थिंक फ्यू व्यूअर्स आर आल्सो वेटिंग फॉर बैंक निफ्टी। राइट। हमारे चैट में ये आ रहे हैं कमेंट्स, तो हम बैंक निफ्टी लेते हैं अभी, जैसे निफ्टी समराइज किया था। सो बैंक निफ्टी जो हमारा है ना, ये एक dysfunctional family. Okay, it is the biggest index that we have, the strongest index that we have in our charts. Okay, इससे बड़ा कोई अपना माना वेटेज कंट्रोल एज एन इंडेक्स कोई नहीं करता है। 6 banks which literally control the market. You can have a trend in a market where bank nifty, if it is muted or if it is declining, then the other sectors will have to take a huge effort, herculean माना massive effort करना पड़ेगा आईटी को, रिलायंस को, एफएमसीजी को, फार्मा को, मेटल को, कि हम निफ्टी को संभाल लेते हैं, आप मना करो। बट जब बैंक निफ्टी चलता है तो अकेले पूरा इंडेक्स को ऊपर ले जाता है, और उसके संग सपोर्ट बन जाता है फाइनेंशियल, बाकी एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनीज, एएमसी स्टॉक्स, वो सारे सेक्टर्स को फिर संभाल लेता है अपने साथ। सो इट्स लाइक अ mothership, it's like that mothership which controls the entire move going up. So if we look at bank nifty also, iska main again I'm going to just try to keep it as simple as possible out here. ये लाइन चार्ट है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। This is the previous peak, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया मैंने। प्रीवियस पीक्स जो माने 2000 के पहले के भी जो चल रहा है मार्केट अपना, जस्ट ट्राई टू कीप इट। सर एक सेकेंड, जो व्यूअर्स चैट में अलग अलग स्टॉक्स एनालाइज करने के लिए बोल रहे हैं, एक 15 मिनट्स का Q&A सेशन हम एंड में करने वाले हैं, जहां पे आपके स्टॉक डाउट्स को हम एड्रेस करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस हम इंडेक्स के एनालिसिस खत्म कर लें, फिर हम लोग एंड में आपके क्वेश्चंस लेने ही वाले हैं। सो अगर हम सिंपल, जस्ट कीपिंग इट सिंपल, अगर बैंक निफ्टी मंथली देखते लाइन चार्ट में, और ये 2015 का पीक को हम 2018 के पीक से ज्वाइन करके इसको ऊपर ले जाए, तो इसमें अभी भी बहुत स्कोप है अपसाइड का, 45, 47 जाने का। जब वंस दी ये जो निफ्टी की मैं करेक्शन की बात कर रहा था, जब वो एंड हो जाएगा, तो ये बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस रुकने नहीं वाली है। ये 47, 48 का कैंडिडेट है, माना इतना स्ट्रांग है ये। इसको अगर वापस हम कैंडल स्टिक में लगाएं, but of course this is monthly chart, this is not for 1 or 2 one settlement trading, we are talking about a bigger picture in the index. Okay, so we go to the weekly में इसको मैं थोड़ा सा अब मीडियम टर्म दिखाता हूं इधर से। ये जो लाइन है, इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं इस लाइन को, और अब इसको हम देखते हैं एज अ चार्ट। ओके, सो now you see it in the daily कि ये इसमें अभी भी, बिकॉज अभी जो निफ्टी 3-4 दिन से माना साइडवेज हुआ था, जो नहीं गिरा, उसका कारण यही था कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी अभी तक गिव अप करने को तैयार नहीं है। जिस दिन ये गिव अप करेगा, उस दिन हम बोल सकते हैं कि ये 41,500 या 41,000 तक आ सकता है। अगेन इसमें भी कीपिंग इट सिंपल, अगर हम एक सिंपल लाइन चार्ट ड्रॉ करें, ओके, ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते, इसको सिंपल लाइन चार्ट, तो यह एक ब्रेकआउट लेवल है इसमें। तो अगर ये लेवल बैंक निफ्टी गिव अप करता है, विच इज 42,200,
42,200 का जो लेवल है, तब हम बोलेंगे हाँ ये एक बार शायद ये लेवल टेस्ट करेगा ये. पर अगर नहीं करता है ड्यू टू एनी रीजन, सो यू कैन सी कि कितना स्कोप है इसको आप जाने का, नॉट जस्ट इन द वीकली, इवन इन द मंथली, माना हर टाइम फ्रेम में. सो ब्यूटिफुली प्लेस फॉर अप मूव्स. देयर इज नथिंग टू स्टॉप इट. ये जब तक ये ट्रेंड लाइन टेस्ट नहीं करेगा इधर, तब तक इसमें कोई मेजर सेलिंग नहीं दिख रहा है. Now, when I said Bank Nifty is like a dysfunctional family, is because it, unlike the Nifty, which is 50 stocks, Bank Nifty is restricted to 10. Okay, so the movements in Bank Nifty are more erratic, both sides, upward moves, downward moves also. But what is happening in Bank Nifty right from the last 1.5 years is that there is no uniform unity among the banking stocks. कभी 2 चलते हैं, कभी 4 डाउन हो रहे हैं, कभी 4 चल रहे हैं तो बाकी 6 डाउन हो रहे हैं, या कोई साइडवेज जा रहा है. सो अभी के जो स्टार परफॉर्मर थे, पहले एसबीआई था और आईसीआईसीआई बैंक था. अब जो कंसोलिडेशन दिख रहा है स्क्रीन में, वो 2 स्टॉक्स में दिख रहा है. एक है कोटक बैंक और दूसरा है एचडीएफसी बैंक. इन दोनों में, बाकी शायद बैंक्स उतना नहीं परफॉर्म करे, बट ये दोनों में ज्यादा दिख रहा है. सो इट्स अ इंडेक्स वेयर one stock can go up, one can go down. So your betting on a particular banking stock is more, you need more solid risk management in that aspect. If you go wrong, you might have a scene where Bank Nifty goes up, your selected bank might not be able to do that. But as of now, it looks like HDFC Bank and Kotak Bank could be their 2 main star performers in this zone. But for this settlement, particularly this settlement, because of Nifty 18,450, 550, the level of 42,500 on a daily basis looks like a tough for the next 4 days. 42,500. Once that is, because if you look at the open interest also, 42,500 is pretty steep open interest. Yeah. In Bank Nifty. And downside, sir, if we move on to the downside, where do you see the support? Upside में तो आपने बता दिया 42,500 will be a level where which will be a major resistance for Bank Nifty. Yeah, so अगर downside में particularly for the next 4 days, this expiry, this settlement. नीचे की तरफ सर कहाँ पे आ रहा है आपके हिसाब से? अगर नीचे I would say कि ये वाला level 41,500 or to this level 41,000 would again attract a lot of buyers if it were to come down. If it were to breach yesterday's low and sustain below it, say for 1 hour, then I would say that these levels are inviting levels to where we would see some kind of again buying would emerge in that level down here totally. Because you see, there's one more factor. We are looking at a index which has just broken out to make a new high. Okay, just. So one golden rule in the market is when a index breaks out, you don't go aggressive shorting in it. You look at pullbacks to buy that. So again, it's not a market to be aggressive short. One off day here, there, different story. It's more of a market to wait for the dip to buy it. So it's a market of not going aggressively long, but not short. It is about buying the dips and significant dips are okay. So sir, now if you have seen, अगर आप देख रहे हो तो निफ्टी आप बोल रहे हो एक रेंज में रहने वाला है. बैंक निफ्टी विल आउट परफॉर्म निफ्टी कंपेरेटिवली अगर आप दोनों इंडेक्स को कंपेयर किया जाए तो. तो सर ये दोनों इंडेक्स तो हमने समराइज कर दिया कि शॉर्ट नहीं करना है, बाइंग द डिप इज द मंत्रा, पर वेट फॉर द डिप. अभी बाय करके कुछ कर, अभी आपको बाय नहीं करना है. शॉर्ट करना है तो बहुत सेलेक्टिव शॉर्ट है, या डोंट बी ओवर एग्रेसिव कि इतना टूटेगा या आउट ऑफ द मनी के आप पुट खरीद लोगे, वो ज्यादा चांसेस बहुत स्लगिश है फिलहाल, बहुत स्लगिश है. वो 1 ऑफ 2 डे गिरेगा, फिर साइडवेज, फिर गिरेगा, फिर वैसा लग रहा है फिलहाल एकदम राइट नाउ. ठीक है, तो सर ये हो गई दोनों इंडेक्स की बात, निफ्टी और बैंक निफ्टी की. तो कुछ स्टॉक्स देखते हैं. अगर आपके रडार पे कोई स्टॉक है तो क्या हम उस स्टॉक को पिकअप कर सकते हैं? सो sticking to Bank Nifty, from an investor point of view, not from a trader point of view, I would look at Canara Bank in particular. Canara Bank, see all PSU banks are going to be the theme of 2023. They've just started.
what we saw in the last few weeks, this is just the start. They are all a buy on dips. All of them, be it Bank of Baroda, Canara Bank, Union Bank, Indian Bank, whichever bank you want to pick up in the PSU size, is a buy on dips. Their entire scenario seems to be changing. You know, पहले क्या होता था, PSU बैंक को छोड़ के कुछ भी ले लो, अब उल्टा हो गया है. अब है PSU बैंक को उठाओ, जितना उठा सकते हैं डिप में बाय है. So Canara Bank is something which, you know, if it comes in this grid, I would say an SIP between 250 on the downside to 340 on the upside for a target of 500, 550. This is something which is looking fantastic. Massive breakout stock है मेरे हिसाब से ये वाला from the banking. फिर stocks में, because थोड़ा सा decline आने वाला है market में, तो I would look at Ashok Leyland from the. सर एक बार कैनरा बैंक का लेवल समराइज कर लें, फिर हम लोग अशोक पे जाते हैं. मतलब the Canara Bank level was that if it is what you call in a SIP range of 250, 60 on the downside to 340 on the upside is the SIP range, because it's a medium to long term breakout we are looking at. So we would be looking at a target of 500, 550 and maybe a lot more in that kind of. ओके, तो मतलब जो बायर्स हैं जिनको एसआईपी करनी है वो टुकड़े टुकड़े में 340 से लेके 250 तक जैसे आपको डिप्स मिलते रहे आपको ऐड करना है कैनरा बैंक ऊपर के टारगेट्स के लिए. ये आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइस है. एडवाइस एज इन यू आर सेइंग कि जिनको इन्वेस्ट करना है. अगेन दिस इज नॉट अ टिप और समथिंग, दिस इज जस्ट आवर एनालिसिस. So coming to this part of जहां मुझे थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है पॉसिबिलिटी, वो है अशोक लेलैंड में. अगेन नॉट इन द नेक्स्ट 4 days, इट कुड हैपन ओवर द नेक्स्ट couple of days, you know, maybe December settlement में ये अपना रंग दिखाएगा. There is a huge possibility of a bearish head and shoulder structure out here. So just draw this. So this is left shoulder, this is the head, this is the possible neckline happening. You know, sustaining below 142. This will open doors down to 130. 130. So what let that 142 be broken, not before that. So give it an hourly close below 142, not before that. Not before that. This can give a dump down properly. There's a proper head and shoulder structure formed out here. And a head and shoulder structure which happens after a strong rally has a higher probability of working. So I'll wait for the breakdown and then take a shot on this. So आप कह रहे हो कि एक स्टॉक जो हमें मिला है वीकनेस साइड पे वो है अशोक लीलैंड, जिसमें बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और 142 के नीचे अगर ये स्टॉक आ गया, डेली क्लोजिंग मिल गया, तो ये 130 की तरफ हेड कर रहा है. ये आपका व्यू है. So for those viewers who understand technicals and Ichimoku, we already have a bearish cloud. There's a full downward movement clear setup out here. If this V breaks, we go. So indicator based में study में भी ये एक weak stock है फिलहाल short term में, और pattern formation में भी ये weak stock है. तो good chances of a dip below this line, not before that. उसके पहले trade नहीं मानना. Let the confirmation come. You can take a trade accordingly. Don't rush into that trade. And even if you are, supposing you're already long in the short term, not in the medium, you know, medium long, the stock is very good. Short term में अगर आप इसमें आपने long लिया तो panic exit नहीं करना है. Trail stop loss आप अपना 142 पे लगा लीजिए. इसका 142. Yes, God. Yeah. तो सर ये हो गई, इंडेक्स हो गया हमारा कवर. हमारे 2 स्टॉक्स भी आपने बता दिए एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस के हिसाब से. सर मैं देख रहा हूँ आपके वॉच लिस्ट में एक 18,300 का पुट
आपने वॉच लिस्ट Right, में ऐड करके right, रखा। तो right. सर थोड़ा इसके ऊपर बताइए कि व्हाई हैव यू एडेड दिस। Correct. So, to go. मतलब आप एक्सपेक्ट करो कि मार्केट नहीं जाने वाला है ऊपर, क्योंकि अगर आपके वॉच लिस्ट में पुट है तो। So, इसमें इसमें आप देखो, ये इचिमुकु स्टडी में हमारा ये बेसलाइन होता है। टेक्निकल थोड़ा बात कर रहा हूँ इधर, बेसलाइन स्टडी। ये एक बार ये जो वॉयलेट हो जाता है ना इसके ऊपर, इसका मतलब इसमें जो शॉर्टर्स थे जिन्होंने 18,300 पुट शॉर्ट किया, वो उनका ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया इसमें। सो और उसके बाद इसने एक छोटा पुल बैक मारा इधर, ये लास्ट 1 आवर का दैट मार्केट, बिकॉज डीके फैक्टर इज सो हाई। तो ये वाला अगर मंडे ऑनवर्ड्स 15 मिनट टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ, इसको एक्सपैंड करता हूँ। इसका टेक्निकली इचिमुकु फ्यूचर कुमो अभी भी बुलिश है। ये अगर 65 का घर नहीं तोड़ता है, 65 का, इट्स एट 78, this has got a very good probability of pushing its way up back to 130 to, I would say, this gap down area of 170, which is in line with 18,150 in the spot index. So it matches with that move, and it comes to this. So it's a good risk reward entry in my view. 78 close hai. It should not go below 65. Anything below 65, I would take an exit. I would keep my stop loss at 65 on 15-minute basis, not just take opening tick, वो सब नहीं देखूंगा। So 15 minutes, 65 के नीचे, I'm out of the trade, and I would be looking for a pullback move, max to max, I would say like this, 150. And once it starts sustaining above 100, इसमें बहुत ट्रैक्शन आएगा। सो स्मॉल क्वांटिटी एंट्री हियर, लार्जर क्वांटिटी एंट्री अबव 100 फॉर 150, बम्पर लॉटरी वुड बी 225 आउट लाइक दैट। सो ये एक है, आई वुड बी अ बायर इन दिस पुट लाइक दैट। तो सर यहाँ पे आई थिंक देयर इज अ गुड फीचर एज वेल, जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं। हाँ, यस। सो यहाँ से ही अपना प्लस हो जाएगा, प्लस you राइट, can straight away buy from here and do your trade. And best हमें part है, आप जो भी इधर आपको नहीं, ऑर्डर इधर नहीं, आप अपना ट्रेल स्टॉप लॉस सब लगा के, अगर आप कुछ और काम कर रहे हो, कोई और ट्रेड कर रहे हो, आप सब कुछ खुद कर सकते हो इधर से, नो इश्यूज एट ऑल। तो मतलब सर ये प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेडर्स को अगर देखा जाए, जहाँ पे अगर आप दूसरी जगह पे कहीं पे भी आप ट्रेड कर रहे हो, आपको हाँ, पहले वॉच लिस्ट में उस स्ट्राइक को ऐड करना पड़ता है, उस स्ट्राइक पे राइट, जाना पड़ता है, फिर आपको ऑर्डर आप किस पे ले रहे हो, लिमिट पे ले रहे हो या मार्केट पे ले रहे हो, फिर स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। तो ये राइट। जो ये फीचर है, अगर आप जैसे ट्रेडर को मैं बोलूं कि आपको मैं आपके चार्ट में ये फीचर दे रहा हूँ कि जहाँ पे आप डायरेक्टली बाय सेल कर सकते हो, तो आई थिंक इवन यू वुड प्रेफर दिस बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। एब्सोल्युटली any time of the day, instead of ये अपना, you can imagine it not just from a positional buyer of a trade stock. Imagine from an intraday perspective also, trading in a lower time frame. तो उतना टाइम थोड़ी मिलता है कि मैं वॉच लिस्ट में ऐड करूं, अच्छा ये ट्रिगर कंफर्म हुआ, इसको भी मैं एंटर करूं, प्लस करूं, माइनस करूं, और वो होगा, इधर क्लिक किया, डायरेक्ट एंट्री हो गया। सो यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, और लॉट ऑफ टाइम इन दिस। तो व्यूअर्स आप इस पे ध्यान दीजिए कि एक फीचर है आईसीआईसीआई डायरेक्ट का, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है और इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर्स है, तो आपके लिए इससे बेटर, इससे और स्मूथ और एफिशिएंट चीज नहीं हो सकता अपने ऑर्डर प्लेस करने के लिए। हम आगे सेशंस में और बताएंगे कि हाउ गुड दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, पर फिलहाल के लिए हमारे पास शायद एक और स्टॉक है जो सर ने चूज किया है। आई थिंक आई कैन सी वन मोर स्टॉक देयर, तो हम उस स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। तो सर जो स्टॉक, इट्स ऑल। So the other stock I have in mind, now this is from the buy point of view, is Chambal Fertilizer. It's getting ready for a buy. So I'll just hide the Ichimoku ones. Okay. Explain it to you. So, so in the month of June, end June, Chambal gave a bullish harmonic pattern reversal. So harmonic studies work basically that a structure based on Fibonacci ratios, the whole buy sell is done. So it becomes a buy or a sell accordingly. And we take a run. So in this one gave a decent pullback. Okay.
Just a second. It gave a 38 to 50% move, decent move from 260 onwards till 350, 90 rupee move in the month, in 3 months. Not even, yeah, probably 3 months, which is quite good from a medium term perspective. So now again, if I'm going to the daily time frame, in the daily time frame, again I have a bullish harmonic structure set up out here. Right here. Out here. So इसका मैं एक बार weekly करता हूँ. It's वापस to explain the logic behind it. इसको मैं expand करती हूँ. So again, one bullish structure leading to another bullish structure. So if this low is held, okay, this low of 280 ka low hai, so I would say 278 at the most, okay, 278, or this line out here, this was the lowest close out here, 271. This was the open out here at 272. So if you just draw a line out here at this level, if this level is held, then there is a good chance that the stock will again give you a reversal from this line. So even if you're not doing harmonics, this swing low to this higher low is getting a support out there. So we could see a reversal again going up like this. Then this particular low out here has a higher low, which is always good from a stock point of view. Ki correction over. Now we are again moving up in that angle. So, but it needs to hold this line out here. ये जो 270 का line है, I don't want to see this broken. Okay, it needs to hold this line and turn from here. And if you do not want to enter a trade just because the pattern is forming out here, then I would suggest that you can wait for an hourly close above 285. Just give it an hourly close above 285. Then your stop loss would be जो भी नीचे का भी low से turn मारेगा. अगर समझो Monday से ही turn मार लेता है, तो 280 है ना, तो 0.5% or 1% below this would be my stop loss, and I would be trading this for a big move up, big move. I would be Sir, again. I would want to interrupt you here. Like many users are not technically so sound. तो उनके लिए hourly close उनको शायद पता नहीं होगा कि what do you mean by hourly close. तो आप माना उसको आप डेली क्लोज में आ जाते हैं हम लोग कि आप उसको मॉनिटर में रखो कि एंड ऑफ द डे में अगर वो स्टॉक 285 के 86 के ऊपर बंद आपको एंड ऑफ द डे क्लोज मिला, तो नेक्स्ट डे आके आप उसको खरीदो. वेट फॉर दिस लेवल टू बी ब्रोकन, वेट फॉर अ टर्न अराउंड above 287. इसमें स्मूथ एंट्री मिलेगा all the way to 300, 320, a lot more. I would look at it as a much bigger reversal taking place. This can be a big winner. 375 to 400 is what I would be looking for in this, in a medium term perspective. So अगर आप इधर लेते हो एंट्री तो 270, अगर आप वेट नहीं करना चाहते हो कि कंफर्मेशन आए तब लूंगा, तो पार्ट एंट्री यहां लो, पार्ट 285 के ऊपर लो, पार्ट 285 के ऊपर, और फुल ऑन जाना है तो अभी लेंगे तो 270 का आपको वो एक ट्रिगर रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस का उसमें, बिकॉज उसके नीचे ये पैटर्न फेल हो जाता है. ठीक है, तो मतलब सर बात ये है कि 270 के नीचे चले जाए तो हम इसको छोड़ देंगे, या तब वो अभी ले सकते हैं. और जिनको और रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है. यहाँ में 10 रुपया का रिस्क है, ऊपर में 90 to 100 रुपीस का वैसा स्ट्रक्चर है इसमें. ठीक है, तो सर आई थिंक आपने जो डिस्कशन करना था हमने सारे आपके वॉच लिस्ट में से सब कुछ ले लिए हैं, कवर कर लिए हैं. सर कुछ व्यूअर्स हैं हमारे जो चैट में 2-3 स्टॉक स्क्रिप्ट्स उन लोगों ने डाले हैं. सो एक है HDFC बैंक,
So there is somebody who's been asking question on HDFC Bank. So if we can just take a view on HDFC Bank. So is it a short-term view or any particular? Sir, वो तो उन्होंने ये नहीं किया है, specify नहीं किया. But let us see it from a normal daily view. So from an Ichimoku trader's perspective, okay, from a short-term trader's perspective, I'm saying is that from an Ichimoku trader that this major spike is seeing some time-wise sideways movement, not price correction, time-wise correction, so that the entire MSCI balancing news पर ये जो spike आया था उसका मेकअप हो रहा है इधर में. तो ये जो sideways movement है ये शायद 1-2 दिन और चलेगा ऐसा, maybe a couple of more days like this. So I would say I would go long in it above 1635 as a trader. Above 1635, my target in that case is 1725 first target to 1900. That kind of a move is possible in HDFC Bank. Massive weightage. It's clearly trying to stop the Nifty, Bank Nifty from falling down. While otherwise, if I want to buy the dip in this, if a dip comes, then like I would wait for 1535.25. This would be the zone. But definitely a bank which can be added like that. So that's my view in HDFC Bank right now. 1635 के ऊपर breakout अच्छा momentum देगा. नीचे आया momentum above 1635. Very strong momentum. We just running out of time, so we have more questions coming. Yeah. So sir, there's somebody who wants a view on HEG. Okay. So we have a viewer Shivani who wants a view on HEG. So HEG currently, again, see the mid-cap sector is seeing some selling pressure happening, and this one particularly saw quite a bit of a hammering down. So in my view, the support level is near 800. Major support is at 800. Anything near 800 will attract buyers, a lot of buyers into the scene. Near 800, that's from the investment point of view, value buying would come in. Their extreme strong support zone out there. And from a trader perspective, I see some resistance near 1100, 1125 right now, 1100, 1125. So I would enter only above this, or I would like to definitely see it trade above 1100. Then I would think of a entry. Right now it is, or I would wait for as close to 800. Okay. As close to 800. I think we have answered the question. Sir, there's someone who is asking you on Bajaj FinServ. So can we have Bajaj FinServ on the screen? And after this, IRCTC. There's someone who's... Railway stocks. Yes. Something wrong in this BFC data. So again, if you look at the Bajaj chart, crazy outperformer in the monthly compared to, we look at other stocks. So in more or less in line with what Nifty did, more or less, but slightly better than Nifty in the up move. In fact, Bajaj FinServ has done better than Bajaj Finance also, comparatively. This one, again, you look at this, I just draw a simple trend line. Okay. So I would be a buyer near 1585.
1585, 1575. I would buy this from that level onwards till 1525. I would be a buyer because from there I see another massive move emerging. Okay. From a short-term trader's point of view, yeah, this would be a derivative short trade for that level, 1585, like this, 1575. उससे ज़्यादा downward ट्रेडर नहीं के लिए देगा ठीक है स्टॉक. या Okay. उधर के लिए और नहीं. और यहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट है 1575, 1500 में. यहाँ पर very good support coming in and that zone. I would be a buyer. See, again, you see sideways, sideways, sideways. So some panic dip to 1585, and then again it will try to go up from there, like that. So the next is IRCTC. There is some viewer who has bought 740 call as well. So first, let us see the stock. कि stock देख के ही समझ में पहले स्पॉट चार्ट देख spot. लेते हैं अपने इसका और फिर उसको एसेस करते हैं. Okay. So clearly, for the next 10-12 days, 770 is a massive resistance. Okay, for the next 10-12 days, monthly impact hai. We're seeing this dip coming here. 666 fell off from 750. Good support. So I would say अगर stock 710 नहीं संभाल पाता है 710 तो वो कॉल मेल्ट होके जीरो हो जाएगा. 710 अगर नहीं संभाल पाएगा तब फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा उसमें. इसमें कोई बुलिश हार्मोनिक है कि नहीं, एक सेकंड ना, जस्ट So the beauty is that मैं इधर में ही अपना एनालिसिस कर रहा हूँ और इधर ही मैं एंट्री भी ले रहा हूँ 7/7. The ICICIdirect is providing you that. Yeah. You have So your all own analysis all in one feature. So if this ये लेवल नहीं होल्ड करेगा जो फ्राइडे लो है 714, so 710 पकड़ूंगा लास्ट. उसके नीचे तो 690 तक जाएगा, कॉल मेल्ट हो जाएगा बिकॉज मंथली एक्सपायरी नेक्स्ट वीक है. सो आई एम प्रिज्यूमिंग ही हैज नवंबर एक्सपायरी. Yes, November. हाँ, so near 690 we will see buyers coming in. Near 690 or level we would see buyers coming in. And if you want to see a bigger picture in this, So we have to take more questions. I think we have answered the question of if 690 doesn't hold, then 650 coming. Yeah, that's a huge support level. Yeah. So next question is on 1 second. Nelco. This is someone Which asked. one? Nelco. 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 Yes. This one? Yeah. $700 looks like a good support level. If that cracks 625, if we go to the weekly, yeah, 700 looks like a very good level. Very good level to, start the accumulation. Max scenario, I would say do an accumulation between 700 to 650. Keep a stop loss at 575. 575 stop loss is good enough, but this looks good for the up move accordingly. From here, we could see a turnaround and back move up. Okay. Good prospect, good addition near 700 on. Okay. Near 700. So we'll take two more stocks because we're running out of time. So one is South Indian Bank. Oh, that's a amazing pick. Whoever is suggesting it. Okay. South Indian Bank. So just for everyone to know, the value of the stock is not $14. It's a 1 rupee face value stock, right? So please keep in mind, it's not that kind of, but it's a fantastic stock. If you compare it with the other Kerala-based bank, which is Federal Bank. Now, Federal Bank had an amazing run. So now this one is catching up. And this one has got tremendous potential
out here. First pause would be near 18, 19. Then I would be looking at 30 and then 40. This is a amazing band to add on to. So an SIP, probably if it gives a pullback till 12, would be a wonderful opportunity to add. Very, very strong. Very, very strong. Okay. Next is IEX. Oh. Used to be a trade. It used to be a favorite stock in 2021. Now it is underperforming. Quite weak. Heavily oversold. It's an oversold stock. So, but weak. There is no reversal coming out here. No sign of reversal. I can't see any bullish harmonic pattern also. Just let me see if there is a bullish harmonic pattern. I can't see any bullish. So basically, avoid list में we'll put this right. हाँ, ये मेरे avoid list में आएगा. Wait. Weak stock है, but extremely oversold है. Extremely oversold है. तो यहाँ पर panic exit अगर आपका पुराना ऊपर भाव में लिया हुआ है, तो यहाँ पर पैनिक एग्जिट में आपको एडवाइस नहीं करूंगा. आपको मैं इतना बोल सकता हूं कि अगर ये वाला जो लेवल है, इफ इट इसका अर्लीस्ट रिवर्सल सिग्नल 139 140 के, अगर 139 140 के ऊपर ये सरवाइव करने लग गया तो आप इसको स्टॉप लॉस बनाइएगा. अपना जो लो बना है 137.50, बट इट नीड्स टू होल्ड दिस 137.50, starts moving up above 140. You could see a traction reversal which could take it all the way back to 150, maybe even 160, 150, 160. But it needs to hold this. Okay. नहीं तो ये फिर वापस वही कंटिन्यूस गिरने लगेगा. 137.50 अगर this is the last hope for longs in the stock. This one. Okay. So I think, sir, we'll stop here. Yeah. We could not take more questions, but we'll be doing this session every Saturday. We'll have you can join us on every Saturday. We'll be doing this. So जो questions हमने आज नहीं लिए, we'll definitely try to take it up in the next session. And also we are quite active on our social media handles. ICICIdirect is active on Telegram. You can find our daily market updates there. You can join our Twitter for updates and any news which is coming up. So you can subscribe to our Instagram channel and also our YouTube. So we'll be doing this. We'll see you guys next week. But before leaving, I'll just summarize what Dinesh sir has said. So sir, आपका निफ्टी व्यू है 18,450 के ऊपर डेली क्लोज मिला तो निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा. इंट्राडे में 550 के ऊपर, नीचे में सपोर्ट 17,900 से 18,150 है. बैंक निफ्टी 42,500 इज अ रेजिस्टेंस, उसके ऊपर एक मूव मिलेगा. नीचे की तरफ अगर है तो 41,000 लेवल के आसपास आप लोग 41,500 is what I'll be looking for. ठीक है. इन्वेस्टमेंट के लिए आपका जो आपने जो स्टॉक ढूंढा जो आपको अच्छा लगा वो कैनरा बैंक था. उसमें एसआईपी इज व्हाट यू वुड डू. आप करोगे उसमें, दैट वुड बी 250 से लेके 340 के लेवल तक आप एसआईपी करोगे फॉर एन अपसाइड मूव. वीक स्टॉक में आपने अशोक लीलैंड पकड़ा है जो 142 के नीचे वीक हो जाएगा 130 के इसके लिए. अगेन बिफोर क्लोजिंग दिस इज नॉट एन एडवाइस, दिस इज नॉट अ टिप. It is just to analyze and help you guys make better decisions. आप जो भी ट्रेड लेंगे वो आपकी जिम्मेदारी है, तो please trade responsibly and keep your capital safe. So with that, we end this live session here. Thank you, Dinesh sir, for. Thank you for having me, Gaurav, ICICIdirect, and I hope it was a wonderful session for all. Thank you very much. Bye bye.